ओवरऑल फिल्म इंडस्ट्री को अगर हम देखें बॉलीवुड एंड स्पेशली रिसेंटली ये जो बिग प्रोडक्शंस हैं साउथ ने बहुत ज़्यादा बज़ क्रिएट किया है. What do you think how important it is कि मूवी के साथ वो सारे 12 मसाले भी पूरे हों लेकिन कोई ना कोई जो है वो मैसेज भी अंडरनीथ होना चाहिए. सो इस लिहाज से आप देख रहे हैं कि ओवरऑल मूवी की जो डायरेक्शन है स्पेशली बॉलीवुड इज इट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन या कुछ इम्प्रूवमेंट्स हैं जो भी मिलकर की जा सकती है. देखिए हिंदी सिनेमा हैज बीन वन ऑफ द लार्जेस्ट फिल्म इंडस्ट्री, राइट, एंड इट हैज गिवन great films, great actors. It has inspired so many filmmakers, so many actors, editors, technicians all over the country and the world to come into films, right, and do really a good job. Now after pandemic, audience is taking time to go back to theatre, and Hindi filmmakers are trying all the things possible to keep entertaining them and keep trying to get them to the theatre. Many of the films have been successful in doing that. Some of the films were not successful in doing that. But I must tell you that it's just about time that Hindi cinema is going to get back to its natural form or the old form very soon. And that's my hunch.